वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज हम यहाँ पर हेरिटेज फेस्टिवल में आए हैं, तो हम पाकिस्तानी स्टॉल पे आए हैं। बहुत ही रौनक है और बेहतरीन म्यूज़िक चल रही है। बिल्कुल भी ऐसा फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान में कहीं फेस्टिवल में गए हों, कहीं प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे वो सब बच्चे हैं जो कि परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पे। ये वही बच्चे हैं जो रेडी होके बैठे हुए हैं परफॉर्म करने के लिए। We have butter chicken and naan, fish pakoda, veggie pakoda, chicken biryani, butter chicken, chapli kebab and naan, chaat papri, and our very dear and very own mango shake. Shake, mango shake. I just want to tell something that if you're not going to Pakistani pavilion, you are not going to see a Lahore. ये हम लोग अभी पाकिस्तानी कुजीन, जो कि हमारा पाकिस्तान का स्टॉल है, वहाँ पर आए हैं। तो हमने सोचा कि इनका अगेन प्रोग्राम शुरू है बच्चों का परफॉर्मेंस। इससे पहले हम लोग फूड लंच कर लें। तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं। इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मेन्यू है। हमने देखा पापड़ी चाट, वेजी समोसा, फिश पकौड़ा, बटर चिकन, चिकन बिरयानी, चपली कबाब, चिकन टिक्का। ये हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं। ये देखिए लाइन। अभी क्योंकि लंच करने का टाइम हो गया है तो भूख भी लगी है, तो सोचा कि पहले लंच कर लें ताकि फिर बाकी प्रोग्राम एंजॉय कर सकें। एक बिरयानी, चिकन बिरयानी है राइट, नॉट द बीफ राइट? चिकन, ओके, चिकन बिरयानी और एक वेजी समोसा, सॉरी नॉट समोसा, वेजी पकौड़ा। एक चिकन बिरयानी, एक वेजी पकौड़ा। यस, ये हमारी बिरयानी आ गई और ये हमारे वेजी पकौड़े आ गए। थैंक यू सो मच बेटा। अभी हम लोग बैठ के पहले फूड एंजॉय करते हैं, बिरयानी और पकोड़े गरम गरम। फिर इसके बाद मैं अंदर जाती हूँ तो मैं आपसे मिलाती हूँ सबसे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर। देखिए हमारे पाकिस्तान के वॉलंटियर्स सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप प्लीज़ शो करें कि आप क्या सर्व कर रहे हो। चिकन बिरयानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नजर इकबाल। आपका नाम क्या है बेटा? मोइस। और आप भी वॉलंटियर हो इधर? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? साद। आप भी वॉलंटियर हो राइट? ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेश सैलेड बना रहे हैं पीछे और सर्व कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आयशा। थैंक यू आयशा। कैसे हैं आप? ठीक है, आप वॉलंटियर कर रहे हो यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी नाइस। आंटी मैं भी। आपका नाम क्या है बेटा? मैं जन्नत। जन्नत, ओ माशाल्लाह, तुम पाकिस्तान कम्युनिटी के बताएंगे? सऊद। और सऊद आप यहाँ पर वॉलंटियर कर रहे हो? वॉलंटियर हो? जी जी। ओके। और आप ये टिक्का और गरम गरम बना रहे हो सबको सर्व करने के लिए? थैंक यू सो मच। नो बेटा, मैंने खा लिया है। मैंने बना रही है। और बेटा सुरान, थैंक यू सो मच। यू आर एंजॉयिंग? दैट्स गुड। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम है सलमान नसीर। और आप क्या सर्व करते हैं? मतलब आप क्या हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? पाकिस्तान PCA कनाडा, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हैं खालिद अजीज, जनरल सेक्रेटरी। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रमोट करना। और इतने सारे अपने वॉलंटियर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ, जैसा आप देख भी सकते हैं, कि ज्यादातर यूथ है। बिल्कुल जो इन्वॉल्व है। हम लोगों ने कोशिश यही की कि अपने यूथ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन उनको इनकरेज करें। बिल्कुल इनकरेज करें, उनको अपने साथ जोड़ें। बिल्कुल, यही आज मैं हूँ, कल कोई और हूँ। बिल्कुल। लेकिन पॉइंट ये सो नाइस ऑफ यू। नए लीडर्स आने चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर। नाम बताएंगे? खालिद अजीज जी। मैं खालिद अजीज जी। और आप क्या करते हैं? आप एज क्या है पाकिस्तानी कम्युनिटी? मैं एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। ओके। और एज ए
professional. I am a civil engineer, work for the city of Edmonton. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अभी कैसा चल रहा है ये? Alhamdulillah, it started a little bit slow. अच्छा। And it was expected. नहीं, I think it will go busy evening time because the first day today, right? Oh yeah, it's the first day. So anyways, like I mean, it picked up like after. और क्योंकि गर्मी है हमारे लिहाज से 26, 27 is lots. Oh yes. So people will come, I think, after 6, inshallah. Yeah. And you guys will be raw. Now you can see that. Yeah. It's kind of like. नहीं हमने यहीं खाया, हमने बिरयानी खाई, पकोड़े खाए गरम गरम। Enjoy किया आपने? Yes, yeah. जबरदस्त। Thank you very much. Thank you Shikar. Thank you very much. So nice. Thank you so much. Thank you. Please अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जवाद चौधरी है जी और मैं और आप PCA में पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ एडमिंटन में एज ए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस काम कर रहा हूँ। ओके तो ऑल द एक्चुअली मेरा काम मोस्टली द पोस्टर्स एंड द उसको देखना, उसको लुक आफ्टर करना, ऑल द ऑनलाइन स्टफ। बिल्कुल यस। कैसा चल रहा है आज? बहुत जबरदस्त चल रहा है। ब्यूटीफुल क्राउड आफ्टर द और सबसे अच्छी बात है कि अपने जो यंगस्टर हैं, ये जो यूथ हैं, वो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है पास्ट 3-4 years में। Yes, yeah. Nice to see younger crowd going बिल्कुल taking participating in this. So nice of you. So nice of you. Thank you so much. Thank you. She's a very good volunteer. I know her. Yeah, she's a devoted volunteer. I know. Laiba, no? So thank you so much. So nice of you, Laiba. पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये स्टॉल है, इसमें ज्वेलरी और कपड़े पीछे। ये देखिए बहुत ही प्यारे कपड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फेमीना, कैसे हैं आप? आपने आज यहाँ पर लगाया है? अच्छा, ये है आपकी ज्वेलरी आप लास्ट टाइम। ये देखिए, ये कस्टम ज्वेलरी भी बनाती हैं और ये ऐसी ज्वेलरी बनाती हैं कि जो वेटिंग्स जो कर रही हैं, जो दुल्हनें हैं, वो भी पहन सकती हैं। तो कैसे आप ठीक है? कैसा चल रहा है? ये तबस्सुम का स्टॉल है, देखिए इन्होंने लगाया हेरिटेज में। चल रहा है? अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। चलो कैसे? यस, नहीं लगाया आप मुझे। ये सब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये है मेरी प्यारी दोस्त नसीम और आयशा रऊफ। अभी बस जो यूथ हैं उनकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, तो चलिए देखते हैं सब। During the 12th century, King Umar Sumru ruled over Tar. In the village of Malir, Marvi was born to a shepherd and a farmer. As she grew up, she became well known for her beauty and infatuated a farm boy in the village. He asked for her hand in marriage, which infuriated her father, causing him to take Marvi away. Fuming with jealousy, the farm boy went to find King Umar Sumru and gave him a lavish description of Marvi's beauty. The ruler was impressed and wanted Marvi for himself. With the help of the farm boy, Umar disguised himself and went to Malir to find his princess. Coincidentally, Marvi was going to the well to get some water, and their eyes met. Taken away by her beauty, he approached her as a thirsty traveler. As Marvi came near to him, he grabbed her and took her to Umarkot. At Umarkot, Marvi was enticed with jewels, luxurious food, status, and clothes. Umar praised her, declared his love for her, and tried to win her over. However, she resisted all the luxuries and promises he presented to her. For Marvi, the soil she came from was more important than any extravagance Umar could provide. Umar was infuriated and imprisoned her in his palace.
strong in her resolve. Umar tried to convince her by saying that although she pined for her people in the village, they had not yet even sent any message. Therefore, it would be best to forget them. Marvi told him that even if she were to die here, she would like her body to be sent to her people to be buried on her native soil. She entered deeper into her sorrow, would count the seasons, and would imagine the lives of her kin in the village. In the end, Umar was incredibly impressed by her faithfulness to her people and freed her. And Marvi was finally able to be reunited with her family in the village. Thank you. That was one of the 3 plays we have coming up. The classic, it's Soni Mahewal. It's one of the 4 timeless, tragic Punjabi tales written in the 18th century. Soni, the daughter of a renowned potter Dullah, was a skilled painter from his forefathers. On the treasures were 2 seals, one bearing the image of Saif and the other one being that of Badiul Jamal. When Saif saw the picture of the fairy, he immediately fell in love with her. He then left his home to search for her, a journey that took 6 years to complete. One day, a saint met Saif in a street of Egypt and gave him a Soleimani cap, telling him that it will take the prince to his desired place. The saint told the prince that he would find the fairy in a lake, but he had to pass several daunting exams and also pray in order to achieve her, as she was a fairy queen and the prince was human. Saif reached the place and started a chilla, which is a 40-day consecutive prayer. Day by day, his health got worse, but he didn't give up and continued to pray. After praying for 40 consecutive days without food and rest, he became exhausted and weak. It was the 14th night of the month, and he thought to himself, maybe tonight I'll see her. Then, suddenly, he saw the fairy queen coming along with her maids towards the lake. She was extremely beautiful with dark hair and radiant eyes. She was truly a sight to behold. He approached her and struck up a conversation with her. After talking to Badiul Jamal, Saif came to know that she was trapped in a castle at Kokahaf by Safed Dio, aka White Giant, for the past 10 years. The White Giant was also in love with the fairy. After listening to the story of the fairy queen, Saif took her and tried to escape from this valley. When the White Giant came to know of this, he created turbulences out of anger in the lake, as a result of which flood came into the Kalhan Valley. They, the fairy and the prince, hid in a cemetery a few miles away from Nadan, but due to the flood, Saif and Badiul Jamal took shelter in a cave near the lake. Legend has it that Asu Lake in Kalhan Valley, a few miles away from Saif al-Muluk, was created out of the tears of the White Giant when he found out the fairy was gone. According to the classic fable, the prince and the fairy queen still live to this day in the cave and dance above the water surface on the 14th night of every lunar month. Thank you. Directed by the PCA youth, so just one big round of applause for them. ये आप देखें हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारी है वो कनाडा में भी कितनी एक्टिव है, और स्पेशली एडमिंटन के जो हमारी कम्युनिटी है बहुत ही एक्टिव है। और आपको पता है ये जो एडमिंटन को कहते हैं कि सिटी ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव होती है, आगे आगे होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel, and thanks for watching again.